हेलो व्यूअर्स एंड यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल ऑफ बिट रील्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग ऑफ माय न्यूली बॉट एग्जॉस्ट साइलेंसर व्हिच आई ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट लाइक 10-15 दिन पहले, और ये आज आया हुआ है, आज सुबह ही डिलीवर हुआ है। तो देखते हैं हाउ इट द प्रोडक्ट इज़ एंड हाउ आई एम गोना इंस्टॉल दिस इन माय बाइक। जैसे कि आप लोगों को पता है, और मैं आपको वॉक थ्रू भी दिखाऊंगा ऑफ माय न्यू मॉडिफाइड कैफे रेसर। एक्चुअली बेसिकली इट वाज 2012 मॉडल हीरो होंडा हंक। तो इसको मैंने मॉडर्न कैफे रेसर का लुक देके इसको थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, कॉन्सेप्ट वही था। तो धीरे धीरे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो सिंस इट्स लॉकडाउन, सो आई एम मेकिंग यूज़ ऑफ दिस टाइम, और मैं अपना बाइक को मॉडिफाई कर रहा हूँ धीरे धीरे। सो आज ये एग्जॉस्ट पाइप आया हुआ है विद द साइलेंसर। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट कैसी है। रहा हम लोग का पैकिंग, तो पता नहीं ये थोड़ा डैमेज तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये ऐसे में भी शायद कस्टमर ने थोड़ा ये सब चेक कर रहे थे। सो लेट्स सी, लेट्स अनबॉक्स दिस। वाओ, कलर तो काफ़ी अच्छी लग रही है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ एक्चुअली डबल बैरल एग्जॉस्ट पाइप, और मे बी इसको मेकर ने डोमिनार को ध्यान में रख के बनाया। So this is it. This is the outlet जहाँ पे हम लोग ये पाइप एंटर कराएंगे, और ये रहा डीपी किलर्स। मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी एंड द कलर कॉम्बो काफ़ी अच्छा लगा। इट लुक्स प्रीटी प्रीमियम एंड इट्स प्रीटी हैवी ऑल्सो। ये 3 किलो का है, और चलिए देखते इसके साथ क्या क्या आया है। So this is completely stainless steel. The material, the build quality is totally stainless and proper pure steel है। So yeah, so this is it. अभी चलिए, let's do the installation. Installation done. Let me know in the comment section if you like it.